Hello बच्चों, let's read this question. The question says dependence of spontaneity on temperature. For a process to be spontaneous at constant temperature and pressure, there must be decrease in free energy of the system in the direction of the process. Right? ये हमारे पास less than zero होना चाहिए. Right? Delta G at constant temperature and pressure implies is equals to zero implies the equilibrium condition. Delta G at constant temperature and pressure greater than zero corresponds to non-spontaneity. Gibbs-Helmholtz equation relates the free energy change to enthalpy and entropy of the process as delta G at constant temperature and pressure is equals to delta H minus T delta S. Magnitude of delta H does not change with change in temperature, but the entropy factor T delta S changes appreciably. The spontaneity of a process depends very much on temperature. For endothermic process, delta H and delta S are positive. The energy factor, the first factor of the equation, opposes spontaneity, whereas entropy factor favors it. At low temperature, the favorable factor T delta S will be small or maybe less than delta G, and J will have positive value indicating the non-spontaneity of the process. On increasing the temperature, the factor T delta S increases appreciably when it exceeds delta H. Delta G would become negative. The process would be spontaneous. For exothermic process, both are negative. Delta H and delta S would be negative. In this case, first factor of equation 1 favors spontaneity, whereas the second factor opposes it. At high temperature, T delta S is greater than delta H. Right? G will have positive value, showing thereby the non-spontaneity of the process. On decreasing temperature, the factor T delta S decreases rapidly when T delta S is less than delta H. Delta G becomes negative and the process occurs spontaneously. Thus, an exothermic process may be spontaneous at low temperature and non-spontaneous at high temperature. Now हमें मेन क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एंड देता है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, whereas it is quite stable at room temperature. The most likely explanation of it is option A, the enthalpy of reaction overweighs the term T delta S at high temperature. Option B, the term T delta S overweighs the enthalpy of reaction at high temperature. Option C, at high temperature both enthalpy and entropy change become negative. Option D, none of these. Right? The key concept for this question is Gibbs-Helmholtz equation, which is delta H minus T delta S is equals to delta G. राइट, हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हमारे पास हाई टेम्परेचर है. राइट, हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि हमारे पास क्वेश्चन में हाई टेम्परेचर है. राइट, ठीक, और डिकम्पोजिशन हो रहा है तो हमें क्या दे रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड. राइट, अच्छा, अगर हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड होगा. राइट, जो कैल्शियम ऑक्साइड देगा वो भी सॉलिड होगा, और हमारे पास देगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का बनना क्या होगा, एंट्रोपिकली फेवरेबल होगा, क्योंकि हमारे पास एंट्रोपी इंक्रीज होगी. राइट, गैस बन रहा है, गैसेस के लिए जो एंट्रोपी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. राइट, और टेम्परेचर भी हमारे पास क्या दिया हुआ है, हाई टेम्परेचर है. अगर हाई टेम्परेचर होगा एंट्रोपी चेंज भी अगर हमारे पास हाई होगा तो क्या होगा, तो ये वाला जो फैक्टर है
बेसिकली क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे, राइट। अगर बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो इसमें बोला है हीटेड टू हाई टेम्परेचर, यानी टी की वैल्यू हमारे पास हाई है, राइट। इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनना वो क्या होगा, एंट्रोपिकली फेवरेबल होगा, यानी ये जो पूरी क्वांटिटी होगी ये हमारे पास नेगेटिव हो गई, राइट। whereas it is quite stable at room temperature। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि उसका जो डेल्टा एच होगा हमारे पास वो कंपैरेटिवली छोटा होगा, राइट। तो डेल्टा एच होगा हमारे पास वो कंपैरेटिवली छोटा होगा क्योंकि ये शो कर रहा है स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर, राइट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टी डेल्टा एस वाला फैक्टर है वो ओवरवेट कर जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, राइट। तो रिएक्शन ओवरऑल क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, राइट, क्योंकि हमारे पास टी डेल्टा एस वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा डेल्टा एच वाले फैक्टर को, राइट। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो डेल्टा जी आएगा वो नेगेटिव आएगा, राइट। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।